In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the last class we have started our chapter number 10, which is power resources of Pakistan and South Asia. Here you can see that it is an image of power resources of Pakistan. Basically power resources ऐसे resources जिनसे हम electricity को produce कर सकते हैं, हमारे कहलाते हैं power resources. Okay, and in the last lecture we have studied about one of the power resource of Pakistan, which is through which electricity can be produced as thermal power plant. In this class we are going to study about another resource through which electricity can be produced is none other than hydel power plants. It's on book page number 44. Okay, hydel power plants, let me explain you in simple words. Basically हाइडल पावर प्लांट्स मीन्स पानी के थ्रू इन डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स. एट हाइड्रो पावर प्लांट इनको हम हाइड्रो पावर प्लांट भी कहते हैं और हाइडल पावर प्लांट्स भी. ठीक है, एट हाइड्रो पावर प्लांट्स वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप और पेनस्टॉक then pushes against and turns blade in a turbine to spin a generator to produce electricity. Basically डैम से किसी पाइपलाइन के थ्रू पानी का टर्बाइंस में मूव करना और फिर टर्बाइंस में बेसिकली ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कि स्पिन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होती है जो कि फिर फर्दर हमारे ट्रांसफार्मर्स में जाती है और फिर वहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स में और फिर हमारे घरों में आती है. वेल दिस पिक्चर is a bit difficult to understand. Here I have attached a more easy picture. It's also in your book. It will be help you to understand the concept of hydel power plants, how electricity can be produced through hydel power plants. Well, basically देखिए, it's an image of a river or a dam. डैम से रिवर से पानी का एक पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करना और कहाँ जाना, टर्बाइंस में. टर्बाइंस में हमारे लगे होते हैं ब्लेड्स जो कि क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पानी को स्पिन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है जो कि हमारी फर्दर जाती है ट्रांसफार्मर्स में. यस, ट्रांसफार्मर में जाके फिर हमारी जाती है इलेक्ट्रिक पोल्स में, जिनको हम आसान अल्फाज में कहते हैं बिजली के खंभे, और इन इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है. वेल लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन ब्रीफली. पानी के थ्रू यानी डैम से रिवर्स के थ्रू वाटर फ्लो करना, पाइपलाइंस के थ्रू डैम्स या रिवर का वाटर पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो करना और जाना टर्बाइंस में. टर्बाइंस में लगे होते हैं हमारे ब्लेड्स जो कि वाटर को स्पिन करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है हमारी ये ट्रांसफार्मर्स में जहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोल्स कनेक्ट होते हैं और फिर यहाँ से हमारे घरों में आती हैं. वेल आई होप this concept is clear how electricity is produced through hydel power plants. Now let's read. In a hydroelectric station, water is stored behind huge dams in the wet season and allowed to run out through huge pipelines where it turns the turbines. Basically वही बात होगी कि ह्यूज डैम्स, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनते हैं जिससे बारिशों के थ्रू भी और वैसे भी पानी जब बढ़ जाता है तो उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है टर्बाइंस में. टर्बाइंस में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और फिर टर्बाइंस में बेसिकली पानी को स्पिन करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर्स में जाती है और फिर वहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोल्स में और फिर से हमारे घरों में आती है. वेल दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइडल पावर स्टेशन. दीज आर द पिक्चर ऑफ मंगला डैम एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ तरबेला डैम. Most famous dams of Pakistan. Okay, Pakistan's main hydroelectric dams are in the north at Warsak, Tarbela and Bangla. These are the main dams through which electricity is produced. Warsak Dam, Tarbela Dam and Bangla Dam. Okay. Well student, that's all about reading and explanation. Now comes to the question answers. In this class we will do the question number 1. We will actually discuss this question in class. You have to do it in your homework. Question number 1 is the actual percentage of power produced by hydroelectric stations is decreasing. Why do you think it is so? वो कहते हैं कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती जा रही है डे बाय डे. ऐसा क्यों है? वाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? सो हाउ विल राइट. फर्स्टली हम लाइन लेंगे क्वेश्चन में इसी. द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देन बिकॉज
because you have to tell the reason, because of the various reasons. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? बारिशों का कम होना, लेस रेनफॉल, ऑब्वियसली कम बारिश होंगी तो हमारे डैम्स में उस तरह से पानी नहीं भरेगा, डैम्स फेलियर हो जाना, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीज़न हो सकती है. Hydroelectric stations are much expensive to construct. They need to be built in the remote areas for geographical reasons. Hydroelectric stations को build करना बहुत ज़्यादा expensive है. Well, this is the briefly idea how you can write the question. You don't need to copy paste. You have to search. Do it by yourself. You can take help from the internet or from a book. You have to write it in the paragraph, not in points. Okay. Well, student, that's all about today's lecture. Your diary is you have to learn plus write question number 1, which you have already discussed in the class on your copies. Well, that's all about today's lecture. So, students, see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.